vivo X60 ने रीडिफाइन किया एंड्रॉयड फोन पे फोटोग्राफी। फिर आया X70 and they took another giant leap forward, gimbal stability and video to the next level। लेकिन अब आया है X80 जो टोटली डिफरेंट लेवल का फोन है। इसमें वीवो ने कहा है कि सिनेमाटोग्राफी जो है इज अ ड्रीम, यानी कि सिनेमाटोग्राफी रीडिफाइंड। कैच वर्ड जरूर है लेकिन ये वीवो है जो कह रहा है, नॉट मी। I will say it after I've tried it, tested it, tortured it. सबसे पहले I experienced this phone in Dubai. I'll tell you about that also. क्या हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग ने देखी वहाँ पे, but I'll talk to you more about that. Then I torture tested this phone here also. Vivo claimed big things about the video and we tested it all to the limit. But to get to all of that, पहले डब्बा तो खोल लें। Now, as always, जो बॉक्स है X सीरीज का is absolutely stunning, मतलब ज्वेलरी बॉक्स टॉप ऑफ द लाइन है। एंड इनसाइड दैट यू गेट ऑल द रेगुलर स्टफ। देखते हैं अंदर क्या है इसके। You get the regular charger, cable, paperwork, a very good high quality case and also earphones, यानी कि packaging redefined। अब usually I talk about the design of the phone first, लेकिन आज हम लोग करेंगे कैमरा के बारे में बात। After all, that's the USP of this phone, right? So this phone packs in a 50 plus 48 plus 12 plus 8 megapixel camera setup। जो main 50 megapixel का कैमरा है has a custom sensor that's been built by Samsung specially for this phone, and वो capture करता है some really amazing shots। I mean, look at the details, the dynamic range, and especially the colors in the photo। मैं कई बार बताता हूँ आपको कि इस फोन में बड़े saturated, overblown colors हैं, इसमें बड़े natural tone है। In this phone, you can enjoy both worlds. Just tap on the Zeiss button in the camera app. Here, see the difference for yourself, how it changes things completely. और क्योंकि इस फोन में Zeiss T-Star lens है, you can notice, or should I say, not notice any glares in the photo. और इसके जो results हैं, they extend to nighttime photography as well. T-Star lens यानी कि कैमरा लेंस पे एक कोटिंग होती है, the unwanted glare और घोस्ट लाइट्स को रिड्यूस कर देता है। इस क्वालिटी के लेंसेज जनरली बड़े हाई एंड कैमरा के लेंसेज पे मिलती हैं। रात में जो फोटोज आप क्लिक करते हैं, जो घोस्ट लाइट्स आती हैं, those are the ones that this eradicate. With the help of the Zeiss T-Star lens, ये सब जो है कम हो जाता है। Even the ultra wide and both the telephoto cameras work amazingly well. Now only if the wide angle lens could have been a little wider. मेरे दिल में तो बल्ले बल्ले शुरू हो जाता है if that had happened, लेकिन you know it's still quite good. अब now let's get to the part that Vivo is claiming, cinematography redefined. तो cinematography यानी कि वीडियो वाले फीचर जो हैं उनको देख लेते हैं। The video quality is absolutely phenomenal. Colors look absolutely beautiful. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, even in low light you won't notice noise in the videos thanks to the V1 Plus chip। ये एक स्पेशल चिप है inside the phone that has been put in just to make this important feature work. Also, you get a ton of other features to pop out for all your cinematography needs. शुरू करते हैं with the Zeiss Cinematic Bokeh Effect. You can get some great looking anamorphic lens effects. See the kind of stuff I'm showing you right now. हम लोग ने ये किया and it was very easy to do. Absolutely brilliant stuff. Then let's move on to horizontal level stabilization. ये बड़ा useful है। Once you lock the horizon, you can go absolutely nuts with the phone. The horizon है, it will remain completely and totally locked. आप roller coaster में चले जाइए, you can go 360 degree like this, it will still remain. Now the front camera also takes some really good photos and videos. So really, cinematography redefined तो absolutely है. Plus I'm going to tell you a small secret. ये जो phone है, it's being used right now to make a film by one of India's biggest directors. And I did go and teach him a few tricks. हाँ, मैं गया था वहाँ पे, कुछ tricks उसको मैंने सिखाए. How to use this phone to make that film. Shh, I can't tell you more. In fact, I think मैंने already ज़्यादा बता दिया. Now let's come back to the phone. कैमरा इन दिस फोन इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। इतने फीचर्स पैक कर दिए उन्होंने। जो कैमरा बम्प इतना बड़ा है एट द बैक, ये तो होना ही था। इनफैक्ट आई थिंक अब इसको कैमरा बम्प नहीं, कैमरा आइलैंड और मे बी अ कैमरा कंट्री ऑफ इट्स ओन बोलेंगे। इट इज दैट बिग, बट यू नो इट्स बीन डन वेल। इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोन। इसमें जो डिज़ाइन दिया है उन्होंने, ग्लास सैंडविच डिज़ाइन है, एंड इसमें जो सैटिन फिनिश दी है एट द बैक, ओह दिस इज सो नाइस। आई कुड डू दिस ऑल डे, दैट वुड बी सिली।
इन हैंड फील ऑफ दिस फोन इज रियली अमेजिंग। कमाल की बात है, इतना बड़ा फोन, इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल एंड द फोन इज स्टिल वेरी वेल बैलेंस्ड। आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आल्सो अलोंग विद IP68 सर्टिफिकेशन ऑन दिस फोन। फ्रंट में ब्यूटीफुल कर्व्ड स्क्रीन दैट एब्सोल्युटली मेल्ट्स अराउंड द फोन, सो गॉर्जियस वन। 6.78 इंचेस की WQHD प्लस E5 AMOLED डिस्प्ले है। फैंटास्टिक स्क्रीन, वन ऑफ द बेस्ट ऑन एनी एंड्रॉइड फोन्स एवर। ये डायनामिकली स्विच कर देगा बिटवीन a refresh rate of 1 Hz to 120 Hz depending upon what you are doing with this phone. Brightness levels great, amazing color reproduction, everything just worked well. Outdoor हो या indoor हो, इस फोन से रिकॉर्ड करे हुए वीडियोस जो हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। You watch them on the screen, you will really feel good about the photography you've done. और to ensure सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलता है, X80 Pro is powered by the super fast Snapdragon 8 Generation 1 chipset. So you know this is the most powerful chipset you can get on a phone and this has been beautifully tuned in this. लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना powerful chipset है, इतना amazing screen है, फोन गर्म हो जाता होगा। That doesn't happen because उसमें vapor cooling chamber जो उन्होंने दिया है, it works very well. हाँ, heavy task, heavy duty gaming में थोड़ी बहुत warmth हम लोग ने feel की, but not the kind which will be actually be a heating issue. Plus 12GB super fast LPDDR5 RAM है, so juggling tasks is super easy, everything just works. What is also super easy is to use this phone all day. इस फोन में इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ अभी भी इसके अंदर जगह थी। 4700 mAh बैटरी मैंने जो इसके अंदर डाल दी, you will get a day and a half of medium use, और इसको चार्ज करने के लिए 80 वॉट चार्जर डब्बे में ही उन्होंने दिया है। So at the end, super duper amazing camera, never ending cinematography and photography features के साथ I think the X80 camera can really put other phone cameras to absolute shame. So cinematography redefined, big tick mark. And the good thing this time with the X series is कि सिर्फ ये कैमरा फ़ोन ही अच्छा नहीं है, बाकी जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। Snapdragon 8 Generation 1 है, 12GB RAM है, E5 AMOLED डिस्प्ले है, वो भी WQHD, अमेजिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ग्रेट बिल्ड है, गुड डिज़ाइन है। आई थिंक ये सिर्फ सिनेमाटोग्राफी रीडिफाइंड ही नहीं है, मेरे हिसाब से दिस इज फ्लैगशिप फोन रीडिफाइंड इन एवरी विच वे। लेकिन टू नो मोर अबाउट दिस उसके लिए तो फुल रिव्यू का आपको वेट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू राइट हियर ऑन टेक मैग्निफाइड। एंड गेस व्हाट, ये तो प्रो वर्जन है, देयर इज अनदर वर्जन व्हिच आल्सो वी विल बी रिव्यूइंग द X80। तो अब आप सोचिए, इतना कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, इतने अच्छे फीचर्स दिखाए, इतने अच्छे डेमो कर दिया, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है, और कर ही रहे हो तो घंटी भी बजा दो।